हेलो एवरीवन एंड अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज आम ये वीडियो रे इम्यून सिस्टम किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन ये डिस्कसन करवा। तो आपने तो फाइनाली निश्चित भाव पढ़ी थे इम्यून सिस्टम। तो ये इम्यून सिस्टम आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें कि बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जदि आपने इम्यून सिस्टम पढ़ी ना तो निश्चित भाव पढ़ी नि कारण यहाँ गोटे इंपोर्टाट चैप्टर ए क्वेश्चन आसार बहुत सारा संभावना रही है। तो निश्चित भाव आप प्रिवियस क्वेश्चन तो आपने पाई सारी। तो समस्त सब्जेक्ट जैसे तीनोटी सिफ्टर सिफ्ट 1 सिफ्ट 2 सिफ्ट 3 तीनोटी सिफ्ट जाकर तो आपने फाइनाली पाई सारी प्रिवियस क्वेश्चन। तो प्रिवियस क्वेश्चन आपने देखा फाइनाली आप गोटे आइडिया पलि आसो क्यों चैप्टर अधिक क्वेश्चन आए क्यों चैप्टर कम क्वेश्चन। तो सेमती किसी ना तो सी तुम जब सी अनुसार पढ़ सेमती पाखे भी समय आप भल भाव सब चैप्टर भल भाव क्लियर कर जातु। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करिया। देखो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही है प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन सेल्स एंजल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो organisms is known as। A process by which certain cells engulf and destroy foreign particles or microorganisms is known as option A cytolysis, option A phagocytosis, option A apoptosis and option D all of the above। तो ये करेक्ट आंसर कौन हो ना ए प्रोसेस बाय व्हिच सर्टेन सेल्स एंजल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज phagocytosis। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट phagocytosis is considered as a dash against infection। Phagocytosis is considered as a dash against infection। ऑप्शन फर्स्ट लाइन डिफेंस ना सेकेंड लाइन डिफेंस ना थर्ड लाइन डिफेंस ना फोर्थ लाइन डिफेंस। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन ना सेकेंड लाइन डिफेंस ना phagocytosis is considered as a second line defense against infection। Next, humoral immunity is provided by option A T lymphocytes, option A T lymphocytes, option B lymphocytes, option C immunoglobulin ना interferon। तो humoral immunity is provided by क्या द्वारा ना B lymphocytes। तो humoral immunity provided by B lymphocytes। Option B is the correct answer। Next question, humoral immunity is also known as option A cell mediated, option B antibody mediated, option C natural and option D interferon mediated। तो humoral immunity is also known as antibody mediated। Next question, T cell immunity is option A cell mediated ना antibody mediated ना natural ना interferon mediated। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना सेल मेडिएटेड। T cell immunity सेल मेडिएटेड। Next, occurrence of certain disease or subclinical infection provides dash immunity। option A natural active na natural passive, option C active artificial na passive artificial। तो occurrence of certain disease or subclinical infection provides natural active immunity। तो option A is your correct answer। Next question, vaccination provides dash immunity। Vaccination provides dash immunity। option A natural active, option B natural passive, active artificial ना passive artificial। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना active artificial। Next question, type of hypersensitivity reaction occurs during transfusion and erythrocytosis fetus are type 1 ना टाइप 2 टाइप 3 ना टाइप IV। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना टाइप AA। नेक्स्ट क्वेश्चन, lifelong immunity developed after the occurrence of disease is known as। lifelong immunity developed after the occurrence of disease is known as option A natural passive immunity ना artificial passive immunity ना natural active immunity ना artificial active immunity। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना natural active immunity। नेक्स्ट क्वेश्चन, cell mediated immunity is carried out by cell mediated immunity is carried out by option A B lymphocyte, option B T lymphocyte, option C monocytes, option D CD4 cells। तो करेक्ट आंसर हो कौन ना T lymphocyte ना cell mediated immunity is carried out by T lymphocytes। Next question, which of the following type of hypersensitivity is known as a delayed type of hypersensitivity and is carried out by T lymphocytes। तो ऑप्शन A type I,
ऑप्शन बी टाइप डबल आई, ऑप्शन सी टाइप ट्रिपल आई ना ऑप्शन डी टाइप आईवी। तो करेक्ट आंसर होइछ आपनकर कोन ना टाइप आईवी ना टाइप आईवी hypersensitivity is known as delay type of hypersensitivity and is carried out by T lymphocyte. Next question. Identify the correct statement related to type I hypersensitivity. Now, immunoglobulin responsible for type 1 hypersensitivity reaction is IgE. Now, mast cell are important cell in the type I hypersensitivity. Now, option C, immunoglobulin responsible for type 1 hypersensitivity reaction is IgG. Now, both A and B. तो correct answer टी ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା both A and B. Next question. Immediate treatment of anaphylaxis is. Immediate treatment of anaphylaxis is. Option A adrenaline ना benzodiazepine ना hydrocortisone ना atropine. तो correct answer टी ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା adrenaline. Next. During blood transfusion therapy, patient develop to wheezing and her skin becomes flushed with hives. These are the characteristics of option A. Hemolytic reaction, na allergic reaction, na transfusion reaction, na thrombotic crisis. तो correct answer है आपनकर कौन ना allergic reaction. Next question. Identify the transfusion reaction among the following. Hemolytic transfusion reaction immediate or delayed. Infection, allergic reaction, na all of the above. तो ये करेक्ट आंसर है कौन ना ऑल ऑफ द एभव. ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एमंग दी ऑप्शन ए हम आंसर बी भी हम सी हम. तो ऑप्शन डी अच्छे ऑल ऑफ द एभव. तो ऑल ऑफ द एभव हूँ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट. आइडेंटिफाई ऑटो इम्यून डिजीज एमंग दी फॉलोइंग. कोटा गोटे ऑटो इम्यून डिजीज एसएलई ना ग्रेव्स डिजीज ना माइएस्थेनिया ग्रेविस ना ऑल द एभव. तो ये करेक्ट आंसर है आपंकर कौन ना ऑल ऑफ द एभव. तो ये जो क्वेश्चन रही है तो आपंकर एत भी किसी हार्ड क्वेश्चन आसो ना. तो देखी देखिए आप सिलेक्टर क्वेश्चन डिस्कसन कर. डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज्ड विथ. डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज्ड विथ. ऑप्शन ए एड्रेनालिन, ऑप्शन बी डोपामाइन, ऑप्शन सी आईवी फ्लूइड ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो ना डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज्ड विथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. नेक्स्ट. The aim of immunosuppressive therapy is to. Option A stimulate the antibody production against foreign antigen ना suppress the production of antibodies against foreign antigen ना promote phagocytosis ना option D all of the above. तो ये आपंकर कौन ना करेक्ट आंसर टी हो ना सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एगेंस्ट फॉरेन एंटीजन. कहीं ना पर्पज ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव थेरापी इज टू रिड्यूस द इम्यून रेस्पॉन्स टू फॉरेन एंटीजेंस बाय सप्रेसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एगेंस्ट इट. तो ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Corticosteroid suppress the function of. Option A sympathetic response, option B parasympathetic, option C immune response, option D cardiac system. तो करेक्ट आंसर टी आपंकर कौन ना ऑप्शन सी इम्यून रेस्पॉन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Secondary immunodeficiency is most commonly due to. Secondary immunodeficiency is most commonly due to. Option A drugs, option B anxiety, option C malnutrition, option D infection. तो करेक्ट आंसर टी आपंकर कौन ना drugs. ना secondary immunodeficiency is most commonly due to drugs. Following traumatic injury and infection, a patient is receiving high dose corticosteroids and broad spectrum antibiotics. The suspected condition is option A candidiasis, option B CMV, option C Shigella, option D plasmodium. तो ये करेक्ट आंसर है आपंकर कौन ना candidiasis. Next question. Which of the following viral infection cause Kaposis sarcoma? Option A human herpes virus 8, HSV8 ना साइटोमेगालोवायरस ना रोटावायरस ना ह्यूमन पैपिलोमा भाइरस. तो करेक्ट आंसर है आपंकर कौन ना ऑप्शन है कि ह्यूमन हर्पेस भाइरस ना ये भाइरल इन्फेक्शन कज कापोसिस सार्कोमा. नेक्स्ट. About Kawasaki disease all are to expect. माने ऑप्शन ए seen in children,
ନାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଗୋଟାକ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଭିତରେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ସିନ୍ ଇନ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍, ଅପସନ୍ ବି କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ମ୍ୟୁକୋକ୍ୟୁଟାନିୟସ୍ ଲେସିଅନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁପରେଟିଭ୍ ଲିମ୍ଫାଡେନୋପାଥି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସୁପରେଟିଭ୍ ଲିମ୍ଫାଡେନୋପାଥି। ନା ଏବାଉଟ୍ କାସିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ट्रू ନା ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। କୋରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଇଜ୍ ଇନଭଲ୍ଭଡ୍, এটা মিউকোকিউটেনাস লেশন, কিন্তু অপশন ডিটা এতে ইনভলভ নো। তো অপশন ডি ইজ দ করেক্ট আনসার। নেক্সট স্ট্রবেরি টং ইজ সিন ইন, স্ট্রবেরি টং ইজ সিন ইন অপশন এ প্যান, অপশন বি কাওয়াসাকি ডিজিজ, না অপশন সি এমপিএ, না অপশন ডি ওয়েগেনর্স। তো করেক্ট আনসারটি হয়েছে আপনার কোণ না কাওয়াসাকি ডিজিজ। স্ট্রবেরি টং ইজ সিন ইন কাওয়াসাকি ডিজিজ। তারপরে নেক্সট ইমিউনোগ্লোবুলিন ইনক্রিজড ডিউরিং সেকেন্ডারি রেসপন্স ইজ, অপশন এ আমার आईजीडी ना आईजीजी, आईजीएम ना आईजीए। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इनक्रीज्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज केउटा हेबो ना आईजीजी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेपरि सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय आईजीए ना आईजीजी ना आईजीएम ना आईजीई। तो करेक्ट आंसर हिजे आपनकर कोन ना आईजीजी। सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स इज मेडिएटेड बाय आईजीजी। नेक्स्ट which of the following immunoglobulin secreted in the mucous membrane of the respiratory tract, option A IgA ना IgD ना IgE ना IgM। तो करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना IgA ना IgA immunoglobulin secreted in the mucous membrane of the respiratory tract। next which of the following immunoglobulin first produces and expressed after an exposure to the infection agent, option A IgG ना IgM ना IgE ना IgD। तो करेक्ट आंसर है आपनकर कोन ना IgM ना IgM immunoglobulin first produces and expressed after exposure to the infection agent। next which is the only immunoglobulin made by fetus at 5 months, IgA ना IgM सेपरि IgE ना IgG। तो इथिमध्य आंसर करेक्ट आंसर है आपनकर कोन ना IgM ना IgM immunoglobulin मेड by the fetus at 5 months। next which of the following immunoglobulin is very important in fighting bacteria and viral infection। तो इथिमध्य क्यों immunoglobulin टी important है fighting bacteria and viral infection। तो करेक्ट आंसर है आपनकर IgG। सेपरि which type of immunoglobulin is associated with allergic reaction। तो क्यों immunoglobulin associated with allergic reaction। तो इथि करेक्ट आंसर है आपनकर कोन ना IgE। सेपरि नेक्स्ट which of the following immunoglobulin is the most abundant isotype in the blood। तो मोस्ट अबाउंडेंट आइसोटाइप इन ब्लड मध्य क्यों इम्यूनोग्लोबुलिन टी जो ना आईजीजी। सेपरि नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय आर प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ, ऑप्शन ए बी सेल्स, ऑप्शन बी टी सेल्स, ऑप्शन सी चिप सेल्स ना पैराइटल सेल्स। तो करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना बी सेल्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय और प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बी सेल्स। नेक्स्ट which immunoglobulin is present in the mucus and helps in protecting against bacteria and virus। which immunoglobulin is present in the mucus and helps in protecting against bacteria and virus। तो इथिमध्य करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना ऑप्शन ए IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन which immunity is affected by HIV infection, natural immunity ना active immunity ना cellular immunity ना humoral immunity। तो करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना cellular immunity। cellular immunity is affected by HIV infection। next question HIV affects B cells ना helper T cells ना neutrophil ना lymphocyte। तो करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना helper T cell। HIV affects helper T cell। next while screening of HIV blood is tested for, option P24 antigen, HIV DNA plasma, HIV antibodies ना presence of HIV RNA। तो करेक्ट आंसर टी है आपनकर कोन ना HIV antibodies। while screening of HIV blood is tested for HIV antibodies। next question which of the following diagnostic test is considered as a which of the following diagnostic test is considered as a gold standard for confirmation of HIV infection। gold standard for confirmation of HIV infection
इलाइजा टेस्ट ना ट्राइडर टेस्ट ना वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ना पाइलोमेरेज चेन रिएक्शन। तो ये करेक्ट आंसर आपंकर कौन ना वेस्टर्न ब्लड टेस्ट ना वेस्टर्न ब्लड टेस्ट डायग्नोसिस कंसीडर एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। तो ये इम्यूनिटी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन। तो ये जो मैंने इम्यूनिटी चैप्टर भलसे पढ़ना तो निश्चित इम्यूनिटी चैप्टर भलसे पढ़ दिखाँ। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको जना पड़ता केतोटी क्वेश्चन आसूँ केतोटी क्वेश्चन आपको आसूनी तो निजे आप जापर से भाव आप प्रिपेरेसन लेवल को से भाव आपने एडजस्ट करेंगे। तो ये इंपोर्टाट वीडियो। तो जदि वीडियो भल लगे वीडियो लाइक करूँ तुम सांग सेयार करूँ।